सीएनजी काफी सस्ता होता है, माइलेज गाड़ियां अच्छी देती हैं और ज्यादा उससे सीएनजी लगवा ले। तो हम निकल पड़े मैकेनिक के पास सीएनजी लगवाने के लिए। तो हम वहाँ पे गए तो भैया ने पूछा हमसे कि आपकी गाड़ी कौन सी। हमने कहा कि टॉप वेरिएंट की डिजायर की पेट्रोल है। बोला एवरेज कितनी देती है। हमने कहा 16-17 है। तो हमने कहा पूछा सीएनजी में कितना देगी। कहा 25+ लोकल में देगी और हाईवे पे आपको 30 का एवरेज मिलेगा। हम बहुत खुश हो गए। फिर वो हमसे सवाल किए कि कितने इंडक्टर है। तो हमें पता नहीं था। हम कहा ये 4 सिलेंडर है। तो बोले नहीं आइए चलिए हम पूछे उनसे तो बताएं कि ये देखिए आपकी गाड़ी 8 इंजेक्टर है। हमने कहा ठीक है भैया आप बताइए कौन सी अच्छा किट है। तो उन्होंने बोला कि सबसे टॉप पे लिवाटो है, उसके बाद मीजो है, फिर मोटोजेन है, ई ग्रीन है। तो हमने कहा ठीक है लिवाटो लगा दिए। बट हमने दिमाग लगाया कि हमारे एरिया में इसका सर्विस सेंटर नहीं मौजूद है, हम कहीं फंस गए हमारी एरिया में तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हमने मीजो का लिया और मीजो का लगवाया और इसमें कोई दबाव ना आए इसलिए हमने इसमें पावर बूस्टर लगवाया है कि डबल ईसीएम लगवाया है इंजेक्टर। ये पता करने के लिए कमेंट करो यहाँ पे। एक चीज और ध्यान दो कि ये हमने टेम्पो भरने के तरीके इसमें नहीं लगवाया, इसको पेट्रोल टैंक के पीछे ही लगवाया। वो देखना चाहते हो कैसे किया। सीएनजी कितना माइलेज देती है ये हर एक ड्राइवर का एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न चलते रहता है, सीएनजी कितना माइलेज देती है। आज सीएनजी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका सब कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगा। एक बहुत बड़े टीचर और विशेषज्ञ हैं खान सर जी, वो क्या बोल रहे हैं पहले आप देख के आइए, उसके बाद मैं अपना राय देता हूं। अब सीएनजी को मान के चलिए कि कोई भी गाड़ी है अगर वो 10 का माइलेज दे रही है, कितने का माइलेज 10 पेट्रोल पर, तो समस्या समझिए क्या है। एक तो ससुरा पेट्रोल क्या है महंगा है, 100 रुपया ऑन एन एवरेज मान लीजिए और माइलेज कितना देगी 10 का, तो यानी 100 रुपया खर्चा किए तो कितना जाएंगे। और अगर वही सीएनजी पे बैठा लेते हैं इसे तो सीएनजी आपका 70-60-70 के आसपास है यहाँ पे, तो 70 रुपए का रेंज है और इस पे जाएगी वो 25 किलोमीटर। देखिए पैसों कम अजैबो करेगी ज्यादा। आई ससुरा धुआं फेंकेगा, आई धुआं नहीं फेंकेगा। कितना अच्छा व्यवस्था है। सीएनजी की बस एक को खराबी है, जब भरवाने के लिए ना काफी लंबा टाइम देना पड़ता है। पेट्रोल की तरह वो नहीं होता है तुरंत क्या कर दिए भर दिए। सीएनजी भरवाना थोड़ा मुश्किल रहता है, सबको बाहर निकाला जाता है, टंकी खोला जाता है, उसमें गैस की तरह भरा जाता है उसको इतना, लेकिन उसमें लाइन लगी रहती है सीएनजी वाले। आप दिल्ली हरियाणा या उस साइड में देखिएगा ना, सारा ट्रक किस पे चलेगा सीएनजी, बहुत पैसे बच जाते हैं। अब देखिए ना किसको नहीं बचेगा, लगभग 3 गुना का प्रॉफिट है आपको। दोस्तों अभी मार्केट में सीएनजी गाड़ी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैन्युफैक्चरर्स भी सीएनजी गाड़ी ही ज़्यादा अभी मार्केट में निकाल रहे हैं। अब सीएनजी कार्स वगैरह, बस, ऑटो और उसके बाद लॉरी तक अब सीएनजी से निकलने लगी है। लेकिन हर एक चीज़ का एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज होता है। तो हम ये वीडियो में जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज में क्या-क्या अंतर है। Advantages and disadvantages of CNG. Well, I'm here in Goa currently driving the all-new Tata Ultras iCNG, as you can tell. Unfortunately, there's an embargo on the car, so I cannot tell you any opinions about it. But what I can talk about is CNG as a subject. So today's episode is dedicated about that, essentially. So now, what are the advantages of CNG? So, for starters, CNG can be locally produced in India itself, so you don't have to rely on foreign oil or something like that, thereby keeping the price of CNG relatively cheaper and a lot more affordable. That's one thing. Second thing is that CNG burns a lot more cleaner. It's unlike LPG, for example, it's not as corrosive, so it keeps your engine healthier. Those are two things. Now, on the contrary, people normally think that it's not healthy for your engine, but it's actually quite decent for your engine. Now, let's talk about a few disadvantages of CNG. Now, the main advantage of CNG is the fact that okay, it's easy on the pocket and it's also, well, it's eco-friendly because again, the kind of fuel you're burning, the emissions you're releasing after burning CNG are considerably lower. So these are few of the advantages of CNG. But what about the disadvantage of CNG? Now, one of the most common disadvantages that we associate with CNG is the fact that you have no more boot capacity left, and that is something that Tata aims to solve with the Ultras CNG. So as you can tell, boot and CNG packed underneath over here. Now the Ultras uses two different tanks. You've got two 30-liter tanks essentially in the back that total up 60 liters, and that's essentially how they take care of CNG. And as you can tell, they have a boot. So this problem is not something that cannot be overcome. It clearly can be overcome. So I wouldn't exactly call that as a disadvantage. Sure, it is a disadvantage if you are getting a CNG tank fit aftermarket.
So that can cost you anywhere in the ballpark of about 30 to 40,000 rupees and can take up a whole amount of boot space. But here, as you can tell, this is one example of a company that solved the problem. In the future, I'm guessing there will be more. So I wouldn't exactly call that as a through and through disadvantage. I would say it's a partial disadvantage depending on if you're buying a new CNG car, if you're buying an aftermarket one, whichever one works. Now, another disadvantage of CNG is the fact that it's not nearly as punchy when it comes to performance. So you are sacrificing performance, but what you are gaining in exchange is the fact that, okay, you have a bit more efficiency, so to say. Another disadvantage, and to me this one really gets me, is the fact that there's always a long waiting line at CNG pumps, and CNG infrastructures are normally limited to metropolitan cities and maybe few tier 2 cities. For the most part, a lot of rural areas still rely on petrol and diesel and don't have any infrastructure for CNG, let alone electricity. So these are few of the advantages and disadvantages of CNG. Be sure to stick around to the Top Gear India YouTube channel to watch the first drive review of the all-new Autorickshaw iCNG. This is Gavin Rodriguez signing off. देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में